Now, welcome, and today we will discuss um, electric potential. Okay. Basically, why we are studying this chapter? Reason to study this chapter. Reason to study potential and potential energy. हम लोग क्यों इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, हम लोग फोर्स निकाल चुके थे. ओके, देन आफ्टर वर्क डन फिर हम फोर्स से निकाल सकते हैं. पर इसमें जो कैलकुलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकालने के बीच, हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता, फिर हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे, और उसके बाद फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बर्डन निकाल सकते थे. बट ये काफी कॉम्प्लेक्स था, और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का नेचर कंजर्वेटिव है, इज कंजर्वेटिव इन नेचर. और कोई भी कि जब कंजर्वेटिव फील्ड होता है उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं. तो उस पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन जब हम करते हैं तो उसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज योर इम्पोर्टेंट टूल टू डिस्कस हाउ इंट्रैक्शन ऑफ दिस इज द टूल्स. ये जो बेसिक जो आपका डिफिनीशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जीरो होगा, मतलब एनर्जी कंजर्व होगा. और तो एंड इस जो टूल्स का यूज करके, जिसका आप नेम कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आप ये लेंथी कैलकुलेशन को डिस्कार्ड कर सकते हैं. देन आप पाथ फंक्शन है जो यहां पर देख रहे हैं, हमारा फोर्स जो पाथ फंक्शन, हमारा ये इंटीग्रेशन जो डिपेंड होता है पाथ पे. अब हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पढ़ेंगे. इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो हम लोग पॉइंट फंक्शंस डिफाइन करेंगे. तो पोटेंशियल जो पॉइंट फंक्शन, ओके, जो पोटेंशियल होगा पॉइंट फंक्शन होगा, किसी पॉइंट पे डिफाइंड होगा. तो हम लोगों का जो ये कॉम्प्लेक्सिटी था जो हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स को अभी तक पिछले चैप्टर में, वो हमारा समाप्त हो जाएगा, और हम आसानी से कॉम्प्लेक्स मोशन को एक सिंपल मॉडल के थ्रू हम पढ़ सकते हैं. जैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होगा, उसका आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका एनर्जी, उसका वेलोसिटी, उसका स्टेट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो इस थ्योरी के थ्रू हम आसानी से, काफी ईज के थ्रू हम उसे डिसाइड कर सकते हैं. और ये पाथ हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता. हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते थे, न्यूटन्स लॉ के बाद हम लोग वर्क और एनर्जी पढ़ा था. सेम चीज हम लोग वहां पर निकालना सीखे थे कि एनर्जी कंजर्वेशन से किसी का वेलोसिटी क्या होगा, वो फ्यूचर मतलब उसका लोकेशन के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होगा. ओके, सो you will learn all these things in this chapter. Interaction of charge and electric field. In electric field, electric field कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होगा, और जिसमें हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे ऑलवेज. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. ओके, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है आपको पता है क्लासिकली जो हाफ mv² होता है. और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अभी सीखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है. बस इस चैप्टर में हम लोग यही डील करेंगे. इसी बिंदु को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और इसका चेंज क्या होगा लोकेशन के साथ. हम चार्ज को पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे तो उसका एनर्जी कितना चेंज होगा, और उस एनर्जी चेंज होने के साथ काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होगा. ओके, और इस टूल्स को हम ऑलवेज यूज करेंगे, और ये जो जस्टिफाई करेगा. ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, और एक पॉइंट फंक्शन डिफाइंड होगा वहां पे पोटेंशियल.
ओके कुछ बेसिक ही न्यूमेरिकल जो भी आईटी का जो एडवांस का प्रॉब्लम होगा इसमें बन जाएगा। और लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसी को इलैबोरेट करेंगे, जब हम देखेंगे कि इसको जब हम डेविड ग्रिफिथ से बनाएंगे। अभी हम लोग बीएम शर्मा पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग डेविड ग्रिफिथ सॉल्व करेंगे। तो वहां पे और हमको डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना होगा, हम लोग देखेंगे लैप्लास पढ़ेंगे, पॉइजन्स और लेजेंड्रे बेसेस इक्वेशंस। तो यहाँ से थोड़ा डिफरेंट स्टोरी होगा, ये जब बेसिक है। ओके तो मुझे एक कैटेगरी बाउंड्री बनाना पड़ता है, मुझे क्या अभी बोलना है और का इसके बाद में क्या बोलना है। यहाँ पे हम काफी कंफर्ट फील करते हैं, तो यहाँ पर बताने के लिए आपको थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ता है। ओके तो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली है क्या, अभी हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि इंटरेक्शन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल गिव यू द पोटेंशियल एनर्जी। ओके and potential energy, you can say this is the energy, and this energy by charge is called your potential at a point, okay। अब इसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे, 2-3 पॉइंट को एलोबरेट करेंगे, प्रोसीड करेंगे और एक बेसिक न्यूमेरिकल्स इक्वेशंस है, कुछ वेक्टर का एप्लीकेशन होगा और ये आपका आईटी इसी में खत्म हो जाएगा। आईटी में कुछ नहीं होता है भाई, बहुत जान नहीं होता है आईटी में। ओके सो यू सी दैट पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स of field only। Okay, suppose that you have given electric field in a space and this is electrostatic field, but how can you say that this is electrostatic field? Okay, there is, because its curl should be 0, you will understand ahead what is this curl should be 0 for electrostatic field। Okay, so it is a function of x, y and z। Sometimes you can express this electric field in one variable x, okay, maybe in xy coordinate, but for generalities I am expressing this electric field in terms of x, y and z। And you can take one reference point। Okay, I can take a reference point because I need to choose 2 points and want to take its motion। Suppose I have point A and point B and the electric field in this direction, and I just take this positive charge, is the positive charge, and make it travel from point A to B। Then what do you expect? Okay, so first Q is small enough not to distort the electric field। Okay, Q इतना छोटा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, इसका जो नेचर होगा, इसका जो इक्वेशंस होगा, ये इसको डिस्टॉर्ट कभी नहीं करने वाला है। ओके, नॉट डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स। हाँ, देखिए चार्ज पार्टिकल है तो आप इसे एक्सलेट नहीं कर सकते हैं। यदि हम एक्सलेट करेंगे तो एनर्जी रेडिएट करेगा, सो इसका कोई काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं होगा। स्लोली स्लोली मूव करेंगे देन, और इसमें कोई एक्सलेशन नहीं होगा, इसे हम स्लोली स्लोली मूव करेंगे। दिस मीन्स motion of charged particle across the field energy electrostatic field is supposed
to proceed with negligible एक्सेलरेशन. व्हाई? बिकॉज अभी इसमें एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा. ये हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं. आई वांट टू कीप इट सिंपल केसेस. ओके, आपको पता होगा कि जब भी चार्ज पार्टिकल को हम ऑक्सीलेट करते हैं या इसे एक्सेलरेशन देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा इससे. लोग हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर्स में. तो यहाँ पे भी हम सिंपल केसेस स्टडी कर रहे हैं कि सर कोई एक्सेलरेशन नहीं है. विथ नेग्लिजिबल acceleration, if have acceleration then it will create energy, and also not allow it, also do not give any kinetic energy to this particle, to charge particle. Okay, this statement is very powerful because from this statement I am just going to write interaction with electric field and these charges. And what do you expect? If you want to move it slowly, then it must feel a force in direction of electric field, and that is QE. But you are moving this in this direction. The direction is changing like this, but at this point, this force external must be equal to this electrostatic force. So F external is nothing but minus QE. Negative means it has a opposite direction to this electrostatic force. This is electrostatic force. And now you define the work done. What is the work done? F external into dl. And dl may be expressed differently in different coordinate system. In Cartesian coordinate system, cylindrical coordinate system, and in a spherical coordinate system. We will let us after. Okay, we will see how to write this. And from say 1 and say 2 for generalization. Okay, this is your work done, and we have minus QE into dl vector. And look at this. This is dot product of this two vector, and we have work done by Q charge is minus E dot dl 2. This is the work done per unit charge in transporting this charge particle from point 1 to 2 without any acceleration. If it has acceleration, you can't write this equation. Okay, these two forces can't be equal. And you can also face some complexities of radiation energy. Of course, we will advance in this chapter or later section. I will guide you to more real problems and more realities that anything could happen. Then how will analyze these situations? Okay, for IT advance, I want to get it simple, very simple. So you have got this expression, work done per unit charge EDL, and this is your depends upon only source field. This is your source field, and a small movement vector dl. You can define work done by Q. Okay, now one question.
Let me justify my statement by one numerical problem so that I can make you understand this expression. Now, one question: find the work done by an external agent in slowly shifting a charge Q is 1 microcoulomb in electric field 10 to the 3 I volt per meter in an x direction from the point 1, 2 and Q 2 3:4। ये आपका क्वेश्चन है। वर्क डन निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई वर्क डन निकालना, हम किसी फोर्स को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और जो फील्ड है हमारा, ये फील्ड आपको एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है। ओके, यदि हम पहले पढ़ रहे होते हैं हम इस एनर्जी कंसिडरेशन से सॉल्व कर सकते हैं, पर हम लोग जो बेसिकली अभी इंटीग्रेशन मेथड देखे हैं, इंटीग्रेशन मेथड जो फॉर्मूला है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू कैन फाइंड वर्क एक्सटर्नल इज नथिंग बट Q 1 to 2 वेक्टर E डॉट dl। ओके, ये देखिए यदि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कंसीडर करते हैं इसका मोशन, हमको कोई ना कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही है x y है। तो dl यू कैन राइट dxi प्लस dy z। ओके, एंड माइनस q, charge is positive 1 into 10 to the power minus 6 coulomb 1 to 2 E is a vector 10 I dot dxi plus dy z. Then you have 1 into 10 to the power minus 6 1 to 2, sorry, तो 1 2 ले सकते हैं आप, वो जो कोऑर्डिनेट है उसे लिखना पड़ेगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 10 इंटू dx और डॉट प्रोडक्ट ऑफ i इंटू जेड 0। तो x का जो dx है, डिस्टेंस कहां से कहां तक है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है आपका 3 है। तो 1 से 3 लिखना पड़ेगा आपको। Then we have 10 to the power minus 6 into 10 3 minus 1, and you have minus 2 into 10 to the power minus तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, 10 to the power 3 दिया। ओके, यहाँ पे हम लोग मिस कर गए, 10 to the power 3। Then we have 10 to the power minus 3 joule. This is your answer. ये क्वेश्चन था वो सिंपल इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट है। Just you can apply simple integration and you can find this answer. I just want to exploit this equation. Work external is nothing but minus Q E dot dl, and from 1 to 2, okay, in electric field. But I just want to take one reference point. Reference point is at infinity,
At infinity, you can say potential is 0. Okay. यदि हम इसे इंफिनिटी से किसी पॉइंट, आप पॉइंट पी को पी कंसीडर करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट करते हैं इंफिनिटी से चार्ज को स्लोली और पी पॉइंट तक आप लाते हैं, तो क्या होगा? जब किसी फील्ड में जब हम लाएंगे तो फील्ड और पॉइंट का इंटरेक्शन होगा। जब फील्ड और पॉइंट का इंटरेक्शन होगा तो वो कैसे एक दूसरे रिस्पॉन्स करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल। ओके, देन व्हाट कैन यू राइट दिस हियर? देखिए, इफ यू से दिस इज वर्क एक्सटर्नल by Q is vector E dot dl, and the right side equation is not dependent upon the test charge. It only depends upon the source charge. So it doesn't matter how much charge you are transporting. Amount may be different. Okay, maybe 2 coulomb, maybe 3 coulomb, maybe the 4 coulomb, may be different. But this quantity is always same. So work external by Q, this quantity is going to be also same. Okay, in a field. And this is called a potential at a point P. Okay. Just exploiting this equation, I can develop this thing. This is constant. It only depends upon the source charge, only depends on the field. And charge interaction with this field, you get work external. And work external, you know, this is electrostatic field is conservation in nature. And you can also describe it in energy. And you will find potential at P in a electrostatic field, you can write minus E dot dl. This is a vector operation. Okay, displacement and E, and you can find, you can write infinity to P. You can find the potential P, and infinity you can say that Vp is 0. Actually, you can write like that: Vp minus V0 minus infinity to the power P. It is V infinity dot dl. Okay, this is very important relationship between, this is the vector operation and you are getting here a scalar. Okay, so once you can find the potential, you can also find the electric field. But to deal with vector, it is a little bit complex and tedious one. You need a lot of knowledge about vector. But once you express this quantity in a scalar, you are getting a scalar. So it's very easy to handle a scalar quantity. You know, vector addition, vector subtractions, and you know, rotation of this vector field. You know, there's so much complexity, you know, involved around this, but it is very easy to deal the scalar quantity. Okay, so you can write this in, this is an integral form of potential. You can also write as that del V by, you know, suppose x coordinate, you will get it Ex. This is in differential form. Once you are given the scalar potential, this is potential, this is a scalar, and this can be expressed in function of x, y, and z. You can easily find electric field in preferential direction, in which directions you want to form. Find, just differentiate it with that coordinate. You can x coordinate in x direction, just differentiate with x.
You can also find in y direction, you can also find with z direction. So this is this quantity is so much important. Just look at this expression, how beautiful it is. One side is vector, one side is scalar. You are getting a scalar things, and it is very easy to handle. Okay, I will exploit this equation everywhere to do numerical equation. So we have potential. So you can write work done external is equal to Q heat. Okay, this is the point function potential. Okay, this is a potential in a field, and you put the charge there Q. Suppose this is your electric field like that, and it is a point in electric field where potential is V. You just multiply by QV, this quantity will give you the energy. Okay, energy is stored in that field. So once you are able to express everything in terms of potential, you can get energy. Okay, so I don't want to deal a lot of things in terms of electric field because the vector quantity. You will see ahead how, बिकॉज हम लोग कैसे इजी करके पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर जो हम लोग देख रहे थे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे, तो जो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि हम कम्प्लेक्स नेचर ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसे हम इस वेक्टर मेथड से नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसे स्केलर की जरूरत पड़ा, तो उसने स्केलर डिफाइन किया, और स्केलर जो डिफाइन किया वो आपका पोटेंशियल है। तो हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे और एनर्जी निकालना होगा, उसे हम चार्ज से गुना कर देंगे। इसी फील्ड में पोटेंशियल क्या होगा। ओके, जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रल, दिस इज इंटीग्रल रिलेशनशिप, आल्सो वी हैव सीन डिफरेंशियल रिलेशनशिप। सो आई जस्ट गोइंग टू राइट वन इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ओके, work done per unit charges. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, हम लोगों को जो सोर्स होगा, सोर्स पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। ये जो सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है, डिस्क्रीट चार्ज, कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट चार्ज हो सकता है, या कंटिन्यूअस चार्ज हो सकता है। जैसे हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे जिस तरह से, उस तरह से हम लोग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं कि पोटेंशियल का फंक्शंस क्या होता है। हम देखेंगे कि एक पोटेंशियल इसका फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान है। अब देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, आसान मतलब क्या है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन फॉर्म करेंगे, इसका जो फंक्शंस होगा 1/r के फॉर्म में होगा, जो काफी हैंडल करना आसान होता है। क्योंकि अब हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सोर्स चार्ज सिंपल लेंगे, जब हम मल्टीपोल लेंगे वहां पे देखेंगे एक्सपेंशन करके, जब हम लोग इक्वेशंस को डील करेंगे, लेजेंडर पोलिनोमियल जनरेटिंग फंक्शन जो वहां पे होगा, तो वहां से कम्प्लेक्सिटी शुरू होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर स्केलर कितना यूजफुल है ये चैप्टर पढ़ने में। क्योंकि हमेशा हम लोग चाहते हैं कि किसी चीज को हम लोग इजी करके पढ़ें, इजी करके हैंडल करें। ओके, सो ये जो हमारा सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, हमारा पॉइंट चार्ज हो सकता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज हो सकता है, एंड it can also be continuous charges. Okay, continuous charges के लिए हम लोग पॉइंट फंक्शंस डिस्क्राइब करेंगे, लैम्डा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं,
सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, जब आप पॉइंट चार्ज दिया हो, लेट अस स्टार्ट विद सिंपल केसेस। जब आपको पॉइंट चार्ज दिया हो, सपोज आप इसे Q मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है आप इसे R कंसीडर कर सकते हैं, और इस पॉइंट पे यदि हम सपोज इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे चार्ज को हम स्लोली ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस पॉइंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्रिएट होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या क्रिएट होगा? एंड यू नो पोटेंशियल इज नथिंग बट vector this operation dl, and this is from infinity to point P. Okay, just I am doing this vector operation to find potential at in a field. You know, electric field is a function of R, and you can write Q by 4 pi epsilon naught R square. And you can write 4 pi epsilon naught R square and dl, suppose ये आपका Q है और ये R है, this is your electric field is in this direction and joining the R, and this is your interesting point where you want to find the potential, and dl is vector like this, and a small distance in the electric field we have dr, and this is dl, and this is your dr, and this angle is theta. Okay, because it's a function of r, so I would like to express this quantity dl in terms of dr, so you can write dr is dl cos theta, and here d dot dl you can write el cos theta, so dl cos theta you can write dr, and this is angle between E and dot dl. Minus, what will you get? This is point P and infinity. You will get Q by 4 pi epsilon naught R. So that this is the thing I'm talking about. This potential looked at a simple expression Q by 4 pi epsilon naught R, not R square. Okay. Electric field, you know, that depends upon R square nature, and this only depends upon R, and this is also a scalar quantity, so it is very easy to deal with. Okay, at R over infinity it is going to be 0. Okay, so this is the potential due to point charges. And this is the source, but you put charges Q amount of charge at point P, what will be the energy of the point P? Nothing but just multiply this charge Q by 4 pi epsilon naught R. Okay, so look at किस तरह से आपको सिंपल करना होगा केसेस को, और कोई भी कुछ भी जब स्टडी करना होता है तो हम चाहते हैं कि हम पहले उसे बेसिक इक्वेशंस में चेंज करें, और हम लोग काफी सिंपल स्टडी कर सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम लोग इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, ताकि हमें सिंपल इक्वेशंस के थ्रू, एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू हम लोग फील्ड और चार्ज इंटरेक्शन को आसानी से हम पढ़ सकें। One question you can write that
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखिए वो स्पेस कोऑर्डिनेट के टर्म में दिया रहेगा ax क्यूब आई, देन फाइंड द पोटेंशियल इन रीजियन, ओके। और मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे इसका चार्ज, इसका जो पोटेंशियल है 0 है, आप ये ज्यूम कर सकते हैं, ओके। तो देख सकते हैं हमारा फंक्शंस क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है और देखिए आई डायरेक्शंस में है, तो आप पोटेंशियल्स निकाल सकते हैं। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट एक्स पे ले जाना है, देन वी हैव माइनस ई डॉट dx, ओके। ये देखिए आई कोऑर्डिनेट में है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ये सिर्फ आई कोऑर्डिनेट में है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे। देन यू हैव ए बाई एक्स क्यूब, this is also in I coordinate, in a small unit vector in x direction. We have like this expression, is very simple one, and you will get 1 by 2x square. So this is your potential, and this also is 1 power less than the x cube x square, and you can, it is a vector quantity, just depends upon coordinate, one coordinate x. So if this type of the electric field is given, you can define the potential. You can find the potential like this. Very simple equations. You just use these equations. I will make you learn how to deal with this vector. Okay. If you understand this, know how to use this, when you take this, or you understand how to solve this, then everything will be very easy, at least for IT level. I'm very curious to jump where are the how to solve David graphic. I'm very curious to go there. Okay, so potential, now for collection of discrete charges, आपको कलेक्शन जब दिया हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, लाइक दैट। जब आपको Q1 दिया हो, Q2 दिया हो, Q3 दिया हो, Q4 दिया हो और कोई पॉइंट P दिया हो, तो आप कैसे लिख सकते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको हर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल लिखना होगा, आप सबको कुछ जोड़ देना होगा, बिकॉज पोटेंशियल या स्केलर क्वांटिटी आप आसानी से लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 एंड फॉर n पार्टिकल्स, okay. And for, you can write like this, summation of Vi, I is our particle, you can write Q1I 4 pi epsilon naught Ri, okay. just add आप कर सकते हैं, सब पोटेंशियल को लिख दें सर, इस कारण से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, आप सिंपल इसे ऐड कर सकते हैं, जस्ट अ स्केलर एडिशन। ओके, व्हेन यू यूज इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, आपको चार्ज कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हो, सपोज यहाँ एक पॉइंट P है, आपका ये चार्ज Q है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RP है, दिस इज RP वेक्टर, एंड ये चार्ज का पोजीशन वेक्टर सोर्स चार्ज का R है, और इसे आप कर सकते हैं R1 से दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। Then what is the potentials at this point P? And the potential is, you can write Q by 4 pi epsilon naught R1. You can also write R1 is RP vector minus R is equal to R1. So you can write vector 4 pi epsilon naught RP vector minus R.
This is the modulus. This may be negative and positive, which one may be higher. Okay. This is the vector. आप वेक्टर के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आरपी है, इस वेक्टर दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस वन. तो आरपी इस पॉइंट में लिखना है, उसका वेक्टर आप लिख सकते हैं. या ये वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ पॉइंट आप उस वेक्टर में लिख सकते हैं. ओके. आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन कितना सिंपल है. इसका यूज करके जब हम एनर्जी निकाल सकते हैं आसानी से, तो हमारा वो इंटीग्रेशंस का प्रॉब्लम सारा खत्म हो गया. ओके. नाउ फॉर कंटिन्यूअस चार्जेस. Now, if you have continuous charges, for continuous charge distribution, now for continuous charge distribution, आपका ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी सरफेस पे भी हो सकता है. दिस इज योर सरफेस, और इस सरफेस को हम पॉइंट चार्ज सिग्मा से डिफाइन कर सकते हैं. तो स्मॉल चार्ज हमारा इस पे लेंगे डी क्यू. यू कैन राइट सिग्मा इंटू डी ए. देन वी हैव पोटेंशियल डी वी. यू कैन राइट डी क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर. This is your position vector for this one R, and this is your interesting point P where you want to define potential. Then you can write dV by integration, you get the potential. So integration, you perform this dQ. You can also write sigma dA and 4 pi epsilon naught R. This is for surface charge distribution. Similarly, charges may be distributed over a volume. Suppose ये आपका volume है. Then you can write potential as rho dV 4 pi epsilon naught R. आप इसे बाहर कर सकते हैं. Sorry, you can 4 pi epsilon naught dV and R. ओके. आपको लाइन चार्ज, फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन ऑल्सो राइट डीवी इज एज 4 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल बाय आर. ओके. एंड I can say that this one and this all may be function of R. इस R का फंक्शन हो सकता है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं किए हैं. ओके. एक सिंपल इंटीग्रेशन से because again I would like to write these equations V2 minus V1. This is change difference of potential between 2 points and work external from transporting the charge from 1 to 2, and this is the amount of charge. Okay, so this is your relations between work in transporting the charge 1 to 2, and this is the amount of charge, and this is the change in potential. And also this is equal to, okay, we can also, okay, this is the only, I have the basic equation. You will always use this and find which one is necessary for you. Always keep in inquiry, please inquire yourself which is you need when you want to solve the problem.
Okay, but small guesses you can, with and some good prejudices and intelligence, you can use this equation to solve the numerical problems. Okay, this is the only basic equations, and this chapter is very important. Okay, this chapter is very important. Only this equation. And Q V2 minus V1 is work external 1 to 2, and this is nothing but change in potential energy. Change in potential energy. Okay, we have work external 1 is to 2 and minus E dot dr. This is a vector operation, and here it is a scalar one. And one more thing, you see this, if I write this is integral form, difference between potentials and electric field, and minus del V by del R, if I say E, what does this indicate? This means in direction of electric field, this decreases. So I can write one thing, in direction of electric field, let me justify this negative charge. This physicality, what is the physical meaning? Without losing any generality, I can say that in direction of electric field, potential decreases. And it also suggests that potential is decreasing in direction of electric field. Potential energy is also decreasing in direction of electric field. Okay. ये सिंगल इक्वेशन से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और सिर्फ आप जो इंटीग्रेशन देखे थे, आप किसी भी सोर्स चार्ज का जो इंटीग्रेशन देखे थे इससे पहले, सोर्स चार्ज दिया हो तो जस्ट सरफेस चार्ज के लिए इंटीग्रेशन, पॉइंट चार्ज के लिए इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन और इस दो इक्वेशंस को परफॉर्म करना है, और ये दिमाग रखना, चेंज इन एनर्जी पोटेंशियल प्लस किनेटिक इज इक्वल टू 0. ओके, सो आपको इस चैप्टर का बस बहुत ही सिंपल चीज याद रखना होगा. अंत में वो बस दो ही चीज को ऑपरेट करेंगे और ये सारा काम हमारा हो जाएगा. तो बहुत आसान है. आईटी तो बहुत आसान है. आईटी का प्रॉब्लम आपको बहुत आसान लगेगा. अच्छा, ओके, नाउ आई कैन गिव यू वन मोर प्रॉब्लम. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज expressed as vector 2I3J volt per meter. Find the potential difference. Find the potential difference VA minus VB between two points A and B, whose position vector are given by vector RA is equal to I plus 2J, and RB, this is position vector, 2I plus J plus 3K, and it is spaced in meter. Now, potential difference between 2 points VA and minus VB, you can simply write that VB minus VA minus vector E dot dl. Just do this operation from A to B. Okay, हम लोग आपको पहले सजेस्ट किए हैं कि आप बस तीन इक्वेशंस को डील करने आना चाहिए.
जिससे आप बहुत सारे सभी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये इंटीग्रल है और जब डिफरेंशियल में दिया हो जस्ट आप डिफरेंशिएट कर दें, देन यू कैन अवेलेबल विथ योर आंसर। ओके, वेक्टर देखिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हैं ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, और जो माइनस होगा वो तो अलग है, पूरे पे माइनस चार्ज है, तो आपको पोटेंशियल ये डिफरेंस मिल जाएगा। कहां से कहां तक है? एक्स ए कोऑर्डिनेट, ये कहां से यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है 1, कहां पे जाएगा एक्स का वैल्यू बी पॉइंट, यहां बी देखें, बी के लिए एक्स कितना है 2 है। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया इसीलिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ई डॉट डी एक्स, ई और एक्स डॉट होगा तो एक्स ही देगा, ई वाई एंड ई जेड, दिस इज वेरी सिंपल। यहां पे कितना होगा, यहां पे y कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, a से b तक, a यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, और z कोऑर्डिनेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ये आपका 0 हो गया, शून्य। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड Ex कितना है 2 है, और जो Dx है वो कहां से कहां तक वैरी कर रहा है 2 से 1 तक, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं अभी 2 माइनस 1 प्लस ई बाय का वैल्यू कितना है 3 है, और यहां लिखेंगे 1 माइनस 2 एंड यू विल गेट 2 माइनस 3 यू विल गेट माइनस 1, और यहां पहले से माइनस है, आप इसे लिख दें, देन आपका 1 हो गया। तो VB माइनस VA, लेकिन हम लोग को आपको बताना है VA माइनस VB, कोई बात नहीं, देन VA माइनस VB इक्वल टू माइनस 1 वोल्ट, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आपको एनर्जी कितना चेंज, आपका ये एनर्जी चेंज कितना होगा, यदि पूछ रहे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस in transporting certain amount of charge, say Q, just multiply with Q, this will give you the change in potential energy. Okay, जब नेगेटिव आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा 1 वोल्ट से ए से बी की ओर, जब हम चार्ज को ट्रांसपोर्ट करेंगे, यदि हम चार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी निकल जाएगा, उतना अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी, slowly moving the point charges in this electric field, then you will get the change in energy by these equations. जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल चुका है तो आपका एनर्जी चेंज भी निकल जाएगा, जस्ट आपको क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Okay, one more illustration. Find the potential difference VAB. A is 0, 0, 0 and B as 1, 1 and 1 meter, all is in meter, in an electric field A. You can write vector quantity as a space coordinate in terms of a space coordinate z, volt per meter, and B, it is expressed in a space coordinate like this.
So this is the two fields, and you move this particle from this coordinate to this coordinate, then what is the change in potential? हम लोग जानते हैं जस्ट स्मॉल दिस इक्वेशंस, जो बहुत काम का है आपका, वेरी यूजफुल, या बस इसे हैंडल करना सीख जाए, देन आपका पोटेंशियल निकल गया। हमारा वेक्टर कितना है? y I प्लस एक्स जेड एंड डी आर हमारा क्या होगा? हमारा डी आर क्या होगा? वो होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। देन आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एंड दिस इज डी वी एंड ऑलरेडी दिस इज द माइनस, आप यहां माइनस कर सकते हैं, माइनस डी वी। यहाँ पर क्या आ गया? दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स वाई on integrating both the side, on integrating both the side, on integrating both side, you will get the function of y as v as xy, and change, just if I write change, then minus VA minus VB, this VA minus VB, then 1, 1, 1 and 0, 0, 0, you will get minus 1 volt, okay, just press 0, 0, 0 and minus 1, 1, this is minus 1 volt, so VAB is your 1 volt and VB minus VA is equal to minus 1 volt. Sorry, आपको VAB निकालना है, this means VA minus VAB। तो आपको पहले एक कोऑर्डिनेट लिखना होगा, इसलिए हम पहले एक कोऑर्डिनेट लिखें, फिर जो B नीचे है जहां पे आपको बाद में लिखे हैं, जैसे भी ए लिखे तो उसमें ए कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, बी लिखेंगे तो बी कोऑर्डिनेट फिर नीचे लिखेंगे। तो हमारा हो गया 1 वोल्ट। एंड सेकेंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज आल्सो गिवन with a space coordinate का फंक्शंस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, एंड दिस इज योर एक्सप्रेशंस 3x स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स क्यूब जे, दिस इज वोल्ट मीटर, देन पोटेंशियल अगेन विथ यूजिंग दिस इक्वेशन माइनस ई डॉट डी आर। अगेन फिर से उसी तरह से हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? ये I है तो 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई डी भी आप माइनस में सेट कर दें, देन यू विल गेट एक्स क्यूब वाई एंड डिफरेंशियल। ओके, आप इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये चीज मिल जाएगा आपको। ये मेरा कहने का, दिस इज मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब वाई, यू विल गेट दिस वन। When integrating the both side, when आप इसे इंटीग्रेट करेंगे dv को तो भी आ जाएगा और आपका आ गया माइनस एक्स क्यूब वाई। दिस इज योर फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। ओके, दिस इज पोटेंशियल विद स्पेस कोऑर्डिनेट। तो आपको चेंज निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, भी ए माइनस भी बी। तो आप इस इक्वेशन को यूज करें विथ प्रॉपर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल वर्क, जो आपका लिमिट दिया हुआ है कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट करना है। ए पॉइंट और बी पॉइंट जो बाद में घट रहा है उसे नीचे लिखें 1 1 1 एंड दिस इज 0 0 0। ओके, भी ए माइनस भी बी।
एक क्वाड्रेंट को यदि भी लिखें ऊपर लिखेंगे, बी को नीचे लिखेंगे। आपका फिर से आ गया -1 वोल्ट। बस इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप यूज करने आना चाहिए, वेक्टर ऑपरेशन को, और आप इस तरह से सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एंड थैंक यू। ये इरोडोव का प्रॉब्लम है, इरोडोव में देखें आपको मिल जाएगा इस तरह से। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लासेस में और देखेंगे इसे आगे।